Guys, welcome back to another video from Biology Pride. So in this video we are gonna cover the last part from chapter number 8, Human Health and Disease, class plus 2 biology, which is adolescence and drug alcohol abuse. So let's do it. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. Adolescence एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ में जो इसे हम पीरियड भी बोल सकते हैं और एक प्रोसेस भी बोल देते हैं जिसमें एक चाइल्ड मैच्योर होता है इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी. द पीरियड बिटवीन द एज 12 to 18 may be thought of as an adolescence period. Adolescence period एज होता है वो between around 12 to 18 years का होता है. In other words, adolescence is a bridge linking between the childhood and the adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Adolescence period में कुछ बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उस चाइल्ड के अंदर, और एडोलसेंस एक वनरेबल फेस है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक इंडिविजुअल की. क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है. वो किस लिए ज़रूरी होती है? एडवेंचर के लिए, किसी एक्साइटमेंट के लिए, और कोई कुछ एक्सपेरिमेंट नया ट्राई करना हो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज़ विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़. अब देखो, ये जो यंगस्टर्स होते हैं इनमें एक क्यूरियोसिटी होती है कोई भी नई चीज़ ट्राई करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, एक्साइटमेंट होती है. तो इनको ड्रग और अल्कोहल यूज़ अब्यूज़ की तरफ ले जाता है. यही एक्साइटमेंट इन्हें अब्यूज़ की तरफ ले जाती है. अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम हर टू एक्सपेरिमेंट. कोई भी एक चाइल्ड है, उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, उसे मोटिवेट करती है किसी भी नए एक्सपेरिमेंट की तरफ. दिस इज़ अकम्पलेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल और ड्रग यूज़. दस द फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम. जब पहली बार अगर कोई ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है, ये क्या पता वो किसी क्यूरियोसिटी से कर रहा हो या एक्सपेरिमेंट बस यूँ ही ट्राई करने के लिए कर रहा हो, बट लेटर ऑन क्या होता है, वो चाइल्ड को उसकी एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है चाइल्ड उस ड्रग और अल्कोहल यूज़ का, एडिक्ट हो जाता है. और वो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ लाइफ में, उन्हें उनको एस्केप, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करने लग जाता है. ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन has played a very significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. कुछ stresses हैं जैसे pressure from examination, ये भी कुछ significant role play करते हैं मोटिवेट करने के लिए लोगों youngsters को to try the alcohol and drugs. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. ये जो यंगस्टर्स हैं इसे कूल करार देते हैं, इन्हें कूल कहते हैं, इन सब चीज़ों को, इन सब हैबिट्स को कूल कहते हैं. टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मूवीज़, इंटरनेट आल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन. कुछ टेलीविज़न में कुछ ही सोर्सेज हैं जिससे ये, और जो ये चीज़ें अपनी बेचते हैं ये और भी प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर. Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among young adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. ये सब चीज़ें भी कुछ factors हैं, जैसे peer pressure, family structure भी इन्हें मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है इन सब चीज़ों को लेने के लिए. Addiction and dependence. Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol use. These drive people to
take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. इसमें ये बताया गया है कि ड्रग्स कैसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली यूज्ड होता है. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक चीज़ है जिसमें एक पर्सन रियलाइज़ करने से मना कर देता है, हालांकि उसे पता होता है, रियलाइज़ करने से मना कर देता है कि अगर इसकी एक बार आदत लग जाती है तो वो कभी नहीं छूटती. आदत, एडिक्शन. एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफ़ेक्ट्स. इसमें क्या होता है, इसमें एक टेम्परेरी फीलिंग आती है वेलबींग की, एसोसिएटेड होती है जो ड्रग और अल्कोहल यूज़ से. ये क्या कर देती है पीपल को, लोगों को ये क्या कर देती है, जब उनका यूज़ नहीं भी करना होता फिर भी वो इस, क्योंकि इनकी एडिक्शन हो चुकी है, फिर भी वो ये चीज़ लेते हैं, ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ करते हैं. और इवन व्हेन देयर यूज़ बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. और यही इनके लिए ख़तरनाक चीज़ है कि ये सारी चीज़ें इनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाती हैं. With the repeated use of drugs, the tolerance levels of the receptors present in our body increases. आपने टॉलरेंस लेवल पढ़ा होगा, टॉलरेंस पढ़ा होगा, उसमें जब कोई भी अगर ड्रग जाती है तो क्योंकि उसके ड्रग का रिसेप्टर होता है, नेचुरली बात है, ड्रग का रिसेप्टर होता है बॉडी में, उसके टॉलरेंस लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction. However, यही रिसेप्टर, क्योंकि देखो अगर कोई रिसेप्टर के ऊपर काफ़ी सारी डोजेस, कोई भी ड्रग आकर अटैच होता है, कोई भी रिसेप्टर पर कुछ भी चीज़ आके अटैच होता है, तो उससे क्या होता है, उसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है रिसेप्टर का, तो उससे और ज़्यादा लेने का एडिक्शन होता है कि और ज़्यादा लो. इसमें ड्रग के केस में कुछ ऐसा ही होता है. हाउएवर, इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज़ ऑफ ड्रग्स इवन वंस कैन बी फोररनर टू एडिक्शन. अगर एक बार यूज़ कर लिया तो ये एडिक्शन की तरफ ही लेकर जाएगा. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into vicious circle, leading to their regular use. Abuse कहते हैं जिसे, किसी भी चीज़ का leading to a regular use, from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and stuck in that way and becomes dependent on their use. जाहिर सी बात है, जब भी आदत पड़ जाती है तो उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है, और किसी भी गाइडेंस के इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग के बजाय वो बाहर नहीं आ सकता उनके बगैर. Dependence is the tendency of the body to manifest up characteristics and unpleasant withdrawal syndrome if regular doses of alcohol or drug is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when use is resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the person may need urgently medical supervision. अब डिपेंडेंसी एक टेंडेंसी होती है बॉडी की टू मैनिफेस्ट ए करेक्टरिस्टिक. अब यहाँ पे ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ से कुछ सिम्टम्स आने शुरू कर देते हैं अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती, जैसे एंग्जाइटी, शेकिंगनेस, नाउजिया, स्वेटिंग. ये हट सकते हैं जब उन्हें दोबारा मिल जाती है वो चीज़. इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर. ये काफ़ी सीवियर हो सकते हैं विड्रॉल सिंड्रोम्स, और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. पर्सनल urgently need a medical supervision. Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his or her needs. These result in many social adjustment problems. Effect of drug alcohol abuse. अब इसका इफ़ेक्ट क्या आता है बॉडी पे? The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. कुछ अजीब सा बिहेवियर आना शुरू हो जाता है. वेंडलिज्म एंड वायलेंस. Excessive dosage of drug may lead to coma and death due to respiratory failure. Excessive dosage of drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage.
A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death. The most common warning signs of drugs and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, and deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite, etc. There may even be some far reaching implication of drug alcohol abuse if an abuser is unable to get money to buy drug if he turn to stealing. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At times, a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली मतलब थ्रू वीन्स थ्रू इंजेक्शन के थ्रू जब लेते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वीन यूजिंग a needle and a spring are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. वो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है उनका लाइक डिसीज लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. The viruses which are responsible for the disease are transferred from one person to another by sharing of infected needles and springs. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal, led to death. AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is transmitted through the infected blood. The use of alcohol during adolescence may also have long term effects. एडोलसेंस एज के दौरान यूज़ अल्कोहल का ड्रग का ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देता है, साथ साथ भी देता है एडवर्स इफ़ेक्ट. इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड. द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड लीवर किरोसिस. ये एक प्रॉब्लम है लीवर की, वो भी इससे हो सकती है. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of drug is what certain sports persons do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, and diuretics and certain hormones in sports to increase their muscle strength and bulk and to promote aggressiveness as a result to increase the athletic performance. अपनी performance को बढ़ाने के लिए जो कुछ अब हाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कुछ ड्रग का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर मसल स्ट्रेंथ, तो ये भी बात गलत है. The side effect of the use of anabolic steroids in females include masculinization features like males, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstruation cycle, excessive hair growth on the face or on the body, enlargement of clitoris, deepening of the voice. In males, it includes acne, increased aggressiveness, mood swing, depression, reduction in size of testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness and enlargement of the prostate gland. These effects may be permanent with the prolonged use. In the adolescents, male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in the stunted growth. अब देखो अगर ये बीमारी ये एडिक्शन हो जाता है तो इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका, इसे प्रिवेंट करने का कोई तरीका भी होगा. यस है. द एज ओल्ड adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohols are more likely to be taken up at the younger age, more during the adolescence age. Hence, it is best to identify the situations that may push an adolescent towards the use of drug and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high levels of nurturance and
Consistent discipline has been associated with lowered risk of substance like alcohol, drug, tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for the prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. First is avoid undue peer pressure. Every child has his own choice and personality, which should be respected and nurtured. Uh, a child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies or sports or other like activities. हर एक चाइल्ड का अपना एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी चॉइस होती है और उस चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नोटिसेबल होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। ये भी एक, अगर इस पे ना ध्यान दिया जाए तो ये भी एक फैक्टर है उनको प्रमोट करना टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। Second is education and counseling. Educating and counseling him or her to face problems and stresses and to accept disappointments and failures as a part of life. एजुकेशन और काउंसलिंग भी ये सिखा सकता है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ डील करना चाहिए। It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga, and other extracurricular activities. Third is seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out of their problem, this would help young to vent their feeling to anxiety and guilt. Fourth is looking for danger signs. Alert parents and teachers need to look for and to identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of the parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Fifth one is seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help those individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug or alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effects and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. This is all about this chapter number 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।